पर बच्चे अपना स्टार्टअप बना रहे हैं। Okay. उनके पास बहुत क्रेजी आइडियाज होते हैं। बोलते हैं हम पेटीएम को डिसरप्ट कर देंगे, कहीं बोलते हैं हम ओयो को डिसरप्ट कर देंगे। सो आई रियली सी दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस इन द स्टूडेंट स्टार्टअप। Hello again. So I am here again with a very great investor. If you are planning to have a startup of your own and if you are looking for some venture capitalist, I'm here with Mr. Pranay Mathur, who is an entrepreneur turned VC. So if you want to know more about how to go about your startup, I have another investor for you today. He is none other than Mr. Pranay Mathur. So welcome to my show, sir. It is really great to meet you here. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. Tell us something about your career journey first. Yeah, I'm not an engineer. I started my career as a Great. freelancer. That is the first thing I was about to ask you. Yeah, but I love technology since the age of 8. I've been doing programming. Right. तो जब मैं 8 साल का था, मेरे ताऊ जी यूएस में रहते हैं, वो मेरे लिए एक लैपटॉप ले आए थे 1992 में। Right. जब मेरी सिटी में किसी के पास डेस्कटॉप भी नहीं था। तो आई स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग। देन व्हेन आई graduated, the only thing I knew was programming. Oh, wonderful. Then I applied in Google, they rejected me. So then I thought कि अब मेरे को खुद को अपना कुछ करना चाहिए। So I started my own journey as a freelancer. Okay. Became a top 10%. So Google had a big loss, right? Yeah, exactly. Now they should be thinking about it. But yes, I always wanted to be an entrepreneur. I started my technology services company in 2010. Worked with customers like Red Bull North America, Disney, Zynga, Network 18. My passion is solving business problems through technology. Wonderful. Grew my team from 3 people to more than 150 people now, globally working with clients. Then when I made my wealth, तो जब आप पैसा कमा लेते हो तो अब आपके दिमाग में आता है कि उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए. Right. That's where I started thinking कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना था. मुझे लगता था कि मेरा पैसा डूब जाएगा शेयर मार्केट में. So I thought कि okay, let's start investing into startups and founders especially जो अपना खुद का business build करना चाहते हैं. I so never how do raised you money. select, like, it's a very strange thing because I have heard investors are like, they can scan people really well. So how do you scan them? No, actually I date with founders. I don't really scan. एक scan में हम founder को नहीं बता सकते. It requires a couple of meetings with them. Sit, coffee, we go to their house, we go to their office. Okay. Understand the founder की उसकी जिंदगी में कैसा है वो, क्योंकि अगर आप किसी को हायर भी कर रहे हो तो आप एकदम से देख के किसी को नहीं बता सकते. It requires time to understand the key people that you are, and it is about investment. आप किसी को देख के या एक मीटिंग में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. Right. So I literally date founders. I go with them on coffee shops, sometimes clubs, sometimes in their office. Okay. फिर मिलके उनके विजन को समझते हैं. और फिर जब लगता है कि हाँ इनका विजन हमारे विजन से कनेक्ट कर पा रहे हैं हम इनसे, then we invest into that. कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स का रहता है, स्पेशली इंजीनियरिंग एज यू सेड? आई थिंक वो लोग ज्यादा स्टार्टअप्स में रहते हैं. एंड कितना परसेंटेज नॉर्मल लाइक अलग लोगों का रहता होगा? एब्सोल्युटली. मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ जहाँ पर ई सेल्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स हैं, वहाँ पर बच्चे अपना स्टार्टअप बना रहे हैं. Okay. उनके पास बहुत क्रेजी आइडियाज होते हैं. बोलते हैं हम पेटीएम को डिसरप्ट कर देंगे, कहीं बोलते हैं हम ओयो को डिसरप्ट कर देंगे. सो आई रियली सी दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस इन द स्टूडेंट स्टार्टअप. But a lot of new students who are looking कि भाई वो उनको जॉब नहीं करनी है, उनको entrepreneur ही बनना है. Right. Now in a big way इंडिया में इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजें आना स्टार्ट हो गई है. And there are investors who are supporting pre-seed or idea-based student startups also. But can you quickly tell us about the documentation which is required, just because I'm giving the first-hand information to our viewers. So I would like to hear from you only what kind of documentation is required in this process. I think if you are reaching out to any investor, first of all the founder should have a pitch deck. Okay. कोई भी एक business plan होना चाहिए. This is the minimum thing that is required to reach out to an investor. Okay. And जब वो business plan आप present करो, then see कि उसमें investor क्या value add कर सकता है. So the bare minimum documentation is business plan, first of all, projections,
जो कि आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कितना रेवेन्यू करेंगे कंपनी के अंदर, कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर्स होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और किस टर्म पे आप शेयर्स देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हम पहले प्रिपेयर करते हैं। वी कॉल इट टर्म शीट। जब हम बिजनेस प्लान देख लेते हैं तो हम एक टर्म शीट उनको इशू करते हैं कि अच्छा इन टर्म्स पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपके स्टार्टअप में। दैट इज द मिनिमम बेसिक। और वो क्या टर्म्स रहती हैं, लाइक इट डिपेंड्स ऑन स्टार्टअप टू स्टार्टअप। अच्छा, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग। या जो भी जैसे भी स्टार्टअप होता है, सो वी लुक इनटू दैट स्टार्टअप, उसका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, उसका 5 करोड़ का वैल्यूएशन होना चाहिए, 15 करोड़ का होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल, द स्ट्रेंथ एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द टीम। फिर हम जाके डिसाइड करते हैं। वी हैव a group of people with whom we discuss. There are an advisory committee, and then we invest into those startups. Okay, great. And we also bring certain domain experts also of that particular industry. तो अगर कोई health tech में कर रहा है तो हम health care का एक expert लेकर आते हैं, because I cannot be the expert of all the technologies, all the domains. So we also discuss with the domain experts, उनकी advice लेके, उनसे समझ के उसके risk क्या हैं, loopholes क्या हैं, फिर हम invest करते हैं। Okay, so any particular example that you remember that you had invested and earned really well? We are just 1 year old fund. We have not took the exits and right now from any investment as of now. But we are also already seeing other investors becoming more interested in our portfolio companies. Okay. There are a couple companies which I don't want to name as of now, but there are companies which have raised follow-up rounds from other investors, right? And there is a keen interest. Right. So we are already seeing a surge in our portfolio value out there. Right. And how much time duration do you take usually to give a go ahead to the to the founder? It usually anywhere from 4 to 6 weeks time that we take. We understand the founder and to finalize the terms and all. Once we finalize the terms, in the 4 to 6 weeks we give them the term sheet. Right. And then after that it requires anywhere from 4 to 8 weeks kind of a time to raise the fund for them. Okay. So let's say they require 1 crore rupees, so we reach out to, because we have a network of more than 600 angel investors with us. Okay. So we also invite all the investors on a Zoom call. In the founders pitch them, and then we invest in that startup. Okay, so that's a kind of second round for them. For any founder, first they are, if they're able to convince you, then you connect them with more investors, right? Exactly. Okay, great. So this was something new, I guess. In case you really want to go for some sort of investment, you have to go through a proper procedure. So go for it. It's good for you in case you don't want to go for a 9 to 5 job, then to invest your time in your own venture. So it was really nice meeting you. Thank you. Thank you so much for your time. Pleasure for the conversation. Thanks.